Namaskar, good evening viewers. You're watching House Highlights on Sansad TV. I'm your host Rajiv Kumar Singh. Thursday was the sixth day of the monsoon session of the Parliament. Legislative business was performed in both the houses and amid din, 3 bills got passed today. In this program, we will look at the highlights of Thursday's proceedings in both the houses. Let us first take a look at the headlines. Rajya Sabha passes Cinematograph Amendment Bill 2023 to curb the menace of film piracy. Bill also prohibits unauthorized recording and exhibition of films. Lok Sabha passes Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2023 and the Repealing and Amending Bill 2022. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar makes a statement on latest developments in India's foreign policy in both houses of Parliament. Let us begin with the proceedings in the upper house. The Rajya Sabha on Thursday passed the Cinematograph Amendment Bill 2023 to combat film piracy, overhaul age-based certification provided by the Central Board of Film Certification. The bill prohibits the unauthorized recording and unauthorized exhibition of films. Highlighting the benefits of the bill, Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur stated that it will reduce piracy, which is inflicting significant losses to the film industry. Unauthorized recording एंड एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स, ये जो फिल्म पायरेसी से जुड़ी हुई है। अब मैं देख रहा था कि प्रशांत नंदा जी ने 18,000 करोड़ से शुरू किया तो 22,000 करोड़ तक यही बात पहुंच गई कि इतने की पायरेसी होती है। अब पायरेसी कितने की होती है किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि कलाकारों की वर्षों की मेहनत पे पानी फेरने का काम होता है। हमने ऐसे दंड का प्रावधान यहाँ पर रखा है कि अगर उनकी मेहनत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है और उसको भी बढ़ाने का उसमें प्रावधान है, ताकि 5% जो उसकी जो बनाने की कॉस्ट है उस तक जाकर उसका किया जा सकता है। 5% तक उसका 5% ऑफ द ऑडिटेड ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द फिल्म, इतना उसको फाइन हो सकता है। Initiating the discussion on the bill, Dr. Prashant Nanda of BJD said piracy has made a huge loss to the economy. He said it has caused jobs and financial loss to the film industry. Members cutting across party lines took part in the discussion. Released today and it is shown in Dubai next day. So for that, actually we are losing, as I have heard, losing around 18,000 crores per year, and 60,000 people are going for jobless. I'm really sad, and I'm happy today that this bill has come where it has taken care of all these things. आज का जो ज़माना है जिसमें हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, बच्चे के पास लैपटॉप है और पूरा सोशल मीडिया, इंटरनेट सब उनके मुट्ठी में है। ऐसी परिस्थिति में कैसे और कहां इसको रोक सकेंगे ऐसे अमेंडमेंट के द्वारा, ये एक प्रश्न मेरे मन में उठता है। दर्शक वर्ग के संदर्भ में जो यूए कैटेगरी 12+ थी उसको हटाकर यूए की कैटेगरी 3 वर्गों में और जोड़ दी गई है। मैं समझता हूं कि ये संशोधन आने के कारण फिल्मों में जो दर्शक वर्ग है उसमें वृद्धि होगी। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that India has been able to focus attention on the most pressing challenges faced by humanity during its G20 presidency. Jaishankar on Thursday made a statement on the latest developments in India's foreign policy in the Rajya Sabha amid din. Of the key foreign policy engagements
and initiatives taken by India since the budget session, which ended on 6 April 2023. This period witnessed several crucial high-level diplomatic engagements, including interactions by the Honorable President, Honorable Vice President Sir, and Honorable Prime Minister with foreign counterparts in India and abroad. I myself visited a number of nations, as did our Ministers of State, and we received many of our foreign colleagues here in India. And through these efforts at multiple levels, we were able to advance our national objectives and interests in a volatile and uncertain world. In terms of the diplomatic engagements of the Honorable President, she hosted the King of Cambodia from May 29 to 31 on his state visit. This marked the celebrations of the 70th anniversary of diplomatic relations between our countries. Honorable President was the chief guest of the celebrations commemorating 150 years of the arrival of Indians in Suriname in June. She was conferred Suriname's highest distinction, the Grand Order of the Chain of the Yellow Star. Honorable President also visited Serbia in the same month. Honorable Vice President visited the United Kingdom on May 5-6 to attend the coronation ceremony of King Charles III. He interacted with various leaders, including the presidents of Germany, of Israel, and Brazil. He also met with Indian students and members of the diaspora. In June, the Honorable Vice President engaged his counterparts from Zimbabwe and Gambia in New Delhi and received the Deputy Prime Minister of the Democratic Republic of Congo. During this period, Honorable Prime Minister visited 7 countries. Bilateral visits were made to Australia, the US, Egypt, France, and the UAE. Prime Minister participated in the Quad and G7 meetings in Japan and co-chaired the 3rd FIPIC Summit in Papua New Guinea. At a time when international relations have become unprecedented and complex, our people-centric foreign policy, which is guided by the demands and aspirations of our society, has shown that India speaks as a voice of peace, of security and prosperity for all, while serving as a force of global good and stability. We have also vigorously defended our national interests. In 2022, at the beginning of Amrit Kal, India assumed the landmark G20 presidency. We will host the summit this September. Our presidency has invigorated our foreign policy and given more force to realize the Prime Minister's vision of an Atmanirbhar and Viksit Bharat that regains its rightful place in the world. Thank you. The statement was later made in the lower house too. After External Affairs Minister S. Jayashankar's statement in the Rajya Sabha, Chairman Dhankar said that the decade belongs to India. He corroborated his statement with his experiences in 3 visits abroad recently. He said the moment of glory for India has come and that moment is being reflected by the ground reality as the world is recognizing it. We must never forget the decade belongs to India, the decade belongs to our country, rise of our country is unstoppable, the century belongs to us. I appeal to you to carefully go through the historic achievements that have been reflected in the address by the Foreign Minister. I have noticed during my 3 visits abroad, being citizen of this country is a great honor. During the question hour in Rajya Sabha today, written replies were given by the concerned ministries to several questions. CPI-M MP Elamaram Karim asked about the number of passports seized by the authorities in the country as the concerned persons travelled to Yemen or such countries.
In his reply, Minister of External Affairs Dr. S. Jaishankar stated that in view of the fragile political and security situation in Yemen, Government of India promulgated a travel ban to Yemen. He added, so far 422 passports have been seized by Indian authorities for travelling to Yemen despite the travel ban. No passports have been seized for travel to any other country. BJP MP Harnath Singh Yadav asked whether government has facilitated the registration on e-Shram portal in order to provide the benefit of government schemes to unorganized workers easily. In his reply, Minister of Labour and Employment Bhupendra Yadav said Ministry launched e-Shram portal on 26th of August 2021 for creation of a comprehensive national database of unorganized workers verified and seeded with Aadhaar. e-Shram portal is meant to register and support the unorganized workers by providing them a universal account number. Congress MP Dheeraj Prasad Sahu asked whether India is planning its own space station. In his reply, MOS for Ministry of Personnel, PG and Pensions, Dr. Jitendra Singh said India has embarked on human space flight program Gaganyaan for development of various technologies which are essential building blocks for human space missions, including space station. These technologies include human-rated launch vehicle, crew module, environment control and life support system, crew escape system, etc. Time for a very short break in the bulletin. News from the lower house on the other side. Welcome back. Let us now take a look at the proceedings in the Lok Sabha. Thursday afternoon, the lower house discussed and passed the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2023 as reported by Joint Committee. Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal moved that the bill to amend certain enactments for decriminalizing and rationalizing offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration and also be passed. Members took part in the debate and the bill was passed by a voice vote. I rise to move that the bill to amend certain enactments for decriminalizing and rationalizing offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business, namely the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2023 as reported by the Joint Committee, be taken up for consideration by the House. जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2022 लोकसभा में 22 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत किया गया था तथा उसी दिन संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया था। वरिष्ठ सांसद श्री पीपी चौधरी जी की अध्यक्षता में यह समिति बनी तथा मुझे भी सदस्य होने के नाते समिति में सहभागी होने का सौभाग्य मिला। इस संशोधन विधेयक में छोटे तकनीकी और प्रक्रिया संबंधी भूल चूक के लिए दांडिक प्रावधान के भय को दूर कर कारोबार पर बल दिए जाने की परिकल्पना की गई है।
यह विधेयक कारोबारी सुगमता, जीवन यापन सुगम बनाने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में काफी सहायक सिद्ध होगा। माननीय सभापति जी, जैसा कि इस बिल के नाम से स्पष्ट है, जन सामान्य में शासन व्यवस्था के प्रति विश्वास में वृद्धि करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कारोबारी सुगमता के लिए इस बिल को लाया गया तथा इसमें 42 विभिन्न कानूनों के दंड विधान को संशोधित करके उनको डिक्रिमिनलाइज किया गया है। The number of offences deregulated by the bill is relatively small compared to the vast regulatory framework in India. The bill might not address the broader issues of over-criminalization in economic legislations. The bill's impact on true deregulation is limited, considering the vast number of imprisonment clauses in economic regulations. जो सजा का प्राविधान था, सजा की जगह एक आर्थिक दंड के रूप में लगाया है और ये देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। और अगर किसी को सजा करके जेल में डाल दो, वो भी मर गया, उसका बिजनेस भी मर गया, तो ये एक अच्छी बात है। इसी से संबंधित मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे साथी जो मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी ने पूरा डिटेल में चर्चा करी है कारोबारियों से संबंधित, इसी तरीके के प्रोविजनों को किसानों के ऊपर भी लागू करा जाए ताकि 80% लोग देश के उनका भी जनविश्वास जीता जाए। जैसे किसानों पे एग्रीकल्चर इनकम पे बिल्कुल टैक्स फ्री है और उनके जितने भी वो सामान खरीदते हैं उस पर जीएसटी टैक्स लगता है, तो उस जीएसटी टैक्स को भी फ्री रखा जाए। और देश में और कई कानून ऐसे हैं, इस पे डिबेट की जरूरत है। 42 ऐसे कानून है, 42 एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें 183 प्रोविजंस प्रावधान है, जिसमें 19 मंत्रालय 19 अलग अलग डिपार्टमेंट्स या मंत्रालय जुड़े हुए हैं, जो लोगों को तकलीफ भी देते हैं। इसमें कई बार गलत काम के भी खबरें आती हैं और छोटी मोटी गलती के लिए सामान्य कारोबारी को, सामान्य व्यापारी को, सामान्य उद्योग से जुड़े हुए व्यक्ति को या सामान्य जनमानस को तकलीफ आती है। ऐसे 42 कानूनों में जो 19 मंत्रालय या डिपार्टमेंट देखते हैं, उसमें 183 प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज करना, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, पहली बार भारत के इतिहास में। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। The lower house also took up the Repealing and Amending Bill 2022 for discussion and passing. MS Law Arjun Ram Meghwal moved the bill to repeal certain enactments and to amend an enactment be taken into consideration and passing. The bill was passed by a voice vote after a brief discussion. With your permission, I move that the bill to repeal certain enactments and to amend an enactment be taken into consideration. The Repealing and Amending Bill 2022. इस विधेयक के तहत जो मोदी सरकार की जो मूल सिद्धांत है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसके तहत इन कानूनों को हटाया जा रहा है। इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो पीरियोडिकल, जो वित्तीय कानून है, वित्तीय अप्रोप्रिएशन के, और उनको पीरियोडिकल हटाना ही होता है, और कुछ ऐसे पुराने कानून हैं जिनका आज कोई औचित्य नहीं है। पिछली बार हमने इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसके बाद हम एक ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर के आए हैं जिसमें 11 ऐसे और बिल जो ब्रिटिश काल के थे, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं थी, नागरिक भी नहीं जानते थे और नागरिक परेशान भी होते थे इससे। इसलिए ऐसे टोटल 76 बिल जो आज हम लेकर आए हैं, अगर टोटल आज पास करेंगे ये, तो ऐसे बिलों की संख्या 1562। ये बड़ी संख्या है साहब। 2014 से एनडीए जब से मोदी जी के नेतृत्व में आई है 1562, और जब मैं अगर यूपीए का आंकड़ा दूं 2004 से 14 एक भी बिल नहीं सब ऐसा। इसका मतलब नागरिक परेशान हो रहे थे, इनको चिंता ही नहीं थी। ये मोदी जी को चिंता है
जिस कारण से ऐसे जो बिल जो निरर्थक है, जिनकी कोई उपयोगिता ही नहीं है, वो लेकर के आए। मैं अनुरोध करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाए। प्रश्न यह है कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। The House had to reassemble at 2 p.m. after it was adjourned due to opposition disruptions during the question hour. Apart from laying off important official papers and statement from ministers, legislative business was undertaken. The Offshore Areas Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2023 was introduced. Coal and Mines Minister Prahlad Joshi moved for leave to introduce the bill to amend the Offshore Areas Mineral Development and Regulation Act 2002. The introduction was opposed by BSP member Ritesh Pandey, but the chair allowed the bill to be introduced. Sir, I rise to move that bill to amend the Offshore Areas Mineral Development Regulation Act 2002 be taken into consideration. श्री रितेश पांडे जी। सर, इस बिल के इंट्रोडक्शन का मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ, रूल्स और रेगुलेशंस 72 के अंतर्गत, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत 51 AG को लेकर के इसको देखने की ज़रूरत है, जिसके अंदर हमारे राष्ट्रीय प्राकृतिक संपदाओं का जो माइनिंग होगा, खास तौर से सी माइनिंग होगी, वो हमारे जो देश का जो रिसोर्सेज है, जो एनवायरनमेंट है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने का कार्य करेगा। और ये आर्टिकल 21 का पूरी तरह से एक उल्लंघन है। Clear legal position that introduction bill can be only opposed under rule 72 on the legislative competence. हम लोग इसका जब इन लोगों ने अलॉट किया, बाद में इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो गया, इलीगल के कारण सीबीआई इंक्वायरी हो गया, चार्जशीट हो गया, सब कुछ हो गया। नाउ वी आर ट्राइंग टू क्लियर मेक द very transparent system of only through auction. This is the only thing we are bringing, and there is no question of any competence arises. This parliament has got full competence. Therefore, I request you to kindly allow to introduce the bill. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill, sir. The opposition continued to create impasse in the lower house throughout the day. Apart from Prime Minister Narendra Modi's reply on the Manipur issue, the opposition was also pressing for the no-confidence motion to be taken up quickly. In the afternoon, Kirit Solanki, who was in the chair, informed the House that the Speaker would schedule a discussion after the next 10 days of admitting it as was stipulated under Rule 198. मैं सभा का ध्यान प्रक्रिया के नियमों के नियम 198 के उपनियम 2 की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा, जिसमें यह उपबंध है कि जब एक बार उक्त नियम के अंतर्गत अनुमति प्रदान कर दी जाती है तो प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख अध्यक्ष द्वारा नियत की जाएगी, जो ऐसी अनुमति प्रदान किए जाने के दिन से 10 दिन के भीतर होगी। परंपरा के अनुसार सभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति प्रदान किए जाने के पश्चात अध्यक्ष सभा के नेता और राजनीतिक दलों के नेताओं से परामर्श करते हैं तथा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख और समय निर्धारित करते हैं। The lower house took up a question hour at the beginning of Thursday's proceedings. BJP member from Godda in Jharkhand, Dr. Nishikant Dubey, asked the first question.
His question related to overbridges over NHS. Dr. Dubey's query related to incompletion of some flyovers in the highways in his home state. Transport and National Highways Minister Nitin Gadkari answered. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नेशनल हाईवे का एक बड़ा काम हो रहा है और कोई ऐसा पार्लियामेंट नहीं है जहां की बड़ा काम नहीं हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, मैं एक बड़ी अपनी पीड़ा बताना चाहता हूं कि एनएचआई तो भारत सरकार बनाती है, एनएचआई का अपना काम है, बढ़िया काम कर रही है। लेकिन जो एनएच है, एनएच के जो काम है वो स्टेट पीडब्ल्यूडी करती है और स्टेट पीडब्ल्यूडी जब करती है तो उसके ऊपर जो है मॉर्थ का, मिनिस्ट्री का कोई भी आप समझिए अधिकार नहीं रहता है या कोई उसके ऊपर बंधन नहीं रहता है। मैं अपने लोकसभा की बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। एनएच 114A में माननीय मंत्री जी ने आज से 5 साल पहले 4 फ्लाईओवर का शिलान्यास कर दिया। उसी तरह से एनएच 133 पर एनएचआई आधा जो है 4 लेन का प्रोजेक्ट बना रही है और एनएच आधा बना रही है, लेकिन इसके बावजूद भी 5 साल में वो 4 फ्लाईओवर नहीं बना और 133 पर जो एक फ्लाईओवर बनना है वो नहीं बन पाया। क्या आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से ये कहना चाहता हूं, क्या उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे और मेरा एनएच कैसे बन जाएगा ये फ्लाईओवर, उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? सम्माननीय स्पीकर महोदय, सम्माननीय सदस्य निशिकांत दुबे ने जो जानकारी दी है वो सही है। विशेष रूप से प्रदेश में स्टेट पीडब्ल्यूडी की ओर से काम होता है। ये टेंडर निकाला गया था, कॉन्ट्रैक्टर के स्लो प्रोग्रेस के कारण वो टर्मिनेट किया गया। अब नया टेंडर निकाला गया है, पर इस नए टेंडर निकालने में काफ़ी देरी हुई है और इसमें देरी हमारे मिनिस्ट्री में हुई है। क्या स्टेट पीडब्ल्यूडी में इसकी इंक्वायरी की जाएगी? काफ़ी प्रमाण में ये देरी होती है, समय का बंधन होना चाहिए और जिसके कारण स्वाभाविक रूप से सम्मान्य सदस्य को ये सवाल पूछना पड़ा है, उसकी इंक्वायरी होगी और जिन्होंने देरी की है वो चाहे मिनिस्ट्री के हो चाहे स्टेट पीडब्ल्यूडी के हो, उनके ऊपर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन का जो आरओबी है ये भी हमने 31/3/2021 को सैंक्शन किया था और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नाउ अभी किया है। नए एजेंसी को पक्का किया जा रहा है और जल्दी ही नए एजेंसी के द्वारा काम शुरू होगा, ऐसा विश्वास मैं आदरणीय सदस्य को देता हूं। The question progressed, but the opposition continued raising slogans and placards. The Speaker, Om Birla, then reminded obstructing members of the reason they have been elected to the House. But the impasse continued and the House had to be adjourned. माननीय सदस्यगण, आप जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, इस संसद की, इस सदन की श्रेष्ठ परंपराएं रही है, उच्च परंपराएं रही है, उच्च मर्यादा रही है। लेकिन आप जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, वह हमारे लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता। मैं आप सबसे पुनः आग्रह करता हूं कि सदन की गरिमा, मर्यादा, उच्च परंपराएं बनाने हम सब की जिम्मेदारी है। हम सबको लोगों ने चुनकर इसलिए भेजा है कि उनके अभाव, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी भावनाओं को सदन में रखें। आप यहाँ नारेबाजी करते हैं, प्ले कार्ड लगाते हैं, माननीय मंत्री जी के आगे प्ले कार्ड लगाते हैं। कोई माननीय सदस्य बेल में आकर स्पीकर से चर्चा करना चाहते हैं, ये तरीका उचित नहीं है। अगर आप इसी तरीके का व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, तो मैं सदन इस तरीके से चलाने वाला नहीं हूं। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। With this, we come to the end of the House highlights. For daily updates, keep watching Sansad TV. Good night.